Good morning, everyone. Welcome to the morning call. We'll start the technical and derivatives outlook. Uh, so the Nifty, in yesterday's session, we saw that the Nifty witnessed a gap up opening, and during the day, it has made a high of 17,527 level. The close for the Nifty has come at 17,486, which was below 17,500. So in yesterday's session, there was little bit the momentum was little bit slow from the Nifty point of view, whereas the Bank Nifty was very aggressive. Bank Nifty has now scaled above 40,000 level and closed at 40,318. So both the indices have seen a gap up opening, and we believe that this is the range breakout which we were talking for the last few trading sessions. For the Nifty, it has been the 15 trading session. After 15 trading session, this breakout has came, and with the gap, so we believe that this is a good like the sustainability of this breakout will be there. So yesterday high was 17,527. So technically, what we believe above 17,550, another 500 points rally close to 18,000 level on the Nifty is very much on the cards. So today above 17,550, we'll be more aggressive towards 18,000 level, whereas 42,000 is the level what we are looking for the Bank Nifty. In a, further from the sector specific, in yesterday, PSU banks and selected auto stocks, followed by metals and oil and gas. That's something which traded in green. The PSU banks are very strongly positive. The results are lined up during the week. SBI, Bank of Baroda, Canara Bank, they all are already trading at the highest point. We maintain that these stocks will continue to see the positive bias, and fresh longs can also be added in this counters. Whereas this technical specifically, Canara Bank is looking positive from the technical point of view, so that some fresh long positions can be seen in this counter. Uh, After this, LNT is something which is looking very strong on charts. So the momentum can be seen in LNT. Apollo Hospital, we are liking at current price 4,500, 4,550 can be the higher side target for the Apollo Hospital. Further, one more stock which we are liking is TVS Motor. Though the stock is all-time high, trading move can be initiated in the TVS Motor. So we have a positive bias. Since the PSU bank is already rallied, now we believe that the momentum in the Axis and Kotak and ICICI Bank can be seen in the coming trading session. So overall, the bias is positive. Largely, the support level for the Nifty now shifts at 17,200. So by any chance, if 17,200 is broken, then we will review and we figure out whether there is any change or trend or something. But then as long as 17,200 levels are held, we are in a safe zone. The levels for the Bank Nifty is 39,000. So 39,000, 38,500. This is the lower side base from where the buying has come. So on the way down to 39,000 will act as a support levels. Overall, the bias remain positive. Coming to FI data, derivatives data. So in yesterday's session, Nifty futures have witnessed short covering to the tune of 7.83%, which was actually to the decline of 13.72% outstanding shares. PCR has climbed from 1.11 to 1.19, which is also the sign of strength. The major additions of call option was seen in the 17,000 strike price at 81.05 million shares, 18,000 strike price at 60.86 million shares, while on the put option, the major additions was seen at 17,000 strike price at 80.35 million shares. Coming to Bank Nifty also saw the short covering in yesterday's session to the tune of 5.82% in change, which is the change in OI. Whereas the major additions were seen in the 40,500 call option by 25.56 million shares and 40,000 put options by 19.20 million shares. The few long build-ups which were seen in yesterday's session was Bayer, India Mart, and Gujarat Gas. Whereas the three short builders are seen in Motherson Sumi, Navin Fluoro, and HDFC Limited. So coming to the FI data, so in yesterday's session, FIs in futures had reduced their shorts and they went long by 27,396 contracts. Overall, this net long short ratio is now scale up to 29.68. So whenever this ratio goes above 35, that is one of the comfort zones. So above 35, they will be more aggressive towards the buying.
Overall, they are in the system. They were initially short by 1 lakh contract. Now that has come to 60,000 contract, which is a little bit, which is increasing. Whereas in the cash, they sold 153 crores, whereas DI has bought 2,084 crores. On the last this thing, there are there are few results update today. There are frontline stocks like IndusInd Bank, Ultratech Cement, Nestle, AU Small Finance, Havels, Inox, Max Financials, Navin Fluorine, Persistent, Shopper stocks. So we have to just be cautious in this stock as we don't trade 2 days before and 2 days after in this particular stock. So one has to closely watch this counter before taking any trade. So that's all from my end. I will over to Bhavesh sir for more updates. Yeah, good morning, team. So, starting off with PSP projects, which reported results. So, results were below expectations. Some net profit came 40 to 43% below our and even consensus expectation. Revenue decreased 9% YOY. Had fallen by 29% YOY, and lower execution translated to uh, lower EBITDA margin also, which stood at 11% compared to 14% last year. Only positive was that there was a strong order inflow, and there is likelihood that order inflow will remain strong going forward. Secondly, Wipro. So Wipro has announced a 5-year deal with Outokumpu. The size is not disclosed, but it is mainly focused on Europe, and Europe revenues will go up for Wipro, so that is positive. Then on LTI Infotech, so L&T Infotech, there is NCLT approval for merger with Mindtree. So this is positive for LTI because the merged entity will be much stronger. So uh, going forward, it will be positive. Lastly, there are a lot of results lined up, which include Inox, Ultratech, Nestle, IndusInd Bank, HDFC, AMC, Havels, Navin Fluorine, etc. So quite a few results will be coming from today. So that's it from me. Over to you, the retail team. Thank you, sir. Good morning, everyone. We'll continue with more further results update, starting with GMDC. GMDC reported their earnings. The net profit stood at 151 crores versus 40.4 crores YOY, while the revenue stood up by 19.3% higher at 539 crores versus 452 crores. And their EBITDA stood at 171 crore. That is from previous, if you see, it was only 26.5, and then margin also stood from 6% to 31.7%. Secondly, Polycab also net profit stood at 268 crore versus 195 crores, and the revenue was higher by 10% at 3,332 crores versus 3,006 crore, and their margin stood from 9.7% to 12.8%. Tata Communication reported their earnings. Their net profit was down by 2.1% at 532 crore versus 543 crores QOQ, while the revenue stood up at 2.8% at 4430 crore versus 4310 crores. Their EBITDA was also up by 4.9% at 1129 crores versus 1077 crores. And their margin also was flattish only from 25% to 24.5%. And then LTDS came up there with the earnings. The revenue was up by 6% at 11,995 crores versus 1874 crores. And their EBITDA was also up by 5%, 421 crores versus 401 crores. Their EBITDA margin was flat at 21%, but the net profit was also nearly flat at 3% at 282 crores versus 274 crores. And then ICICI Lombard came up with their earnings. The revenue was up by 18% at 4499 crores versus 3808 crores. Their EBITDA was also up by 12% at 510 crores versus 457 crores. And their margin was also more or less flattish at 11.3% versus 12%. But the net profit was also up by 32%, 591 crores versus 447 crores. Sonata Software also came with their earnings. Their revenue fell by 16% in for 1496 crores versus 1779 crores. But the EBITDA was up by 10% at 140 crores versus 128.67. And the margin was at 9% versus 7%. But the net profit was nearly at 6%, 1112 crores versus 107 crores. And they declared an interim dividend of 7 rupees per share.
And we see more further updates that US FDA has issued Form 483 with 4 observations to Alembic Pharma's Panilev injectable facility. This inspection was done between October 4 to October 14. Next is with Bharti Airtel SpaceX to continue funding Starlink internet users in Ukraine, and it withdraws Pentagon funding request for Elon Musk. Elon Musk says that. And then Adani Enterprise Wire's arm has acquired Airworks, the second oldest maintenance, repair, and overhaul unit for enterprise valuation of 400 crores. This group controls 7 airports, and the latest acquisition will also maintain and capability of all 3 aircraft maintenance verticals: airline, business, and checks and defense. And then telecom shares, if we see Mukesh Ambani led Reliance Jio became the largest landline service provider for the country first time in August, with 7.35 million landline connections as on August 31st. And Reliance Jio also beat state-owned telecom operator, that is BSNL, which is having 7.13 billion connections. Telecom subscriber data also came up in July month. If we see, then Airtel added only 3.26 lakh subscribers, while the Jio added 32.8 lakh subscribers, while Vodafone Idea lost 19.6 lakh subscribers. Ambuja Cements also company said that it has issued 477.4 million warrants to Adani family for Harmonia Trade and Investment, which will raise 5,000 crore from there. BEL has signed a MOU with Defense PSU Munitions India Limited to jointly address the requirements of Indian defense and export markets in the areas of ammunition, explosion, and related systems. For the ITC, the company has entered an agreement to acquire additional 1,000 compulsory convertible preference share of Mother's Parsh, and this shares, once acquired, will take the company shareholding to 22%. The Suven Life Sciences also is coming with the upcoming right issue, and their opening date would be October 31st. 31st in the November 10 would be the closing date. Prestige Estates said that the company recorded quarterly sales of 3,511 crore, up 66%, and the collections were at 2603 crore. Harsha Engineers, the company said that the letter of intent to Clean Max Environment Energy Solution for setting up a hybrid power project at Pipalia, Gujarat. Piramal Pharma also said that the company has demerged from the PEL and will be listing its shares on the bourses today, and it would be a T2 category stock. Tech Mahindra said that on Tuesday it has signed a memorandum with Gujarat government to expand its operations by hiring over 3,000 employees in the state over the next 5 years. And yeah, that's it from mine. I'll hand over to Kshitija for Hindi updates. Thank you. थैंक यू सर. गुड मॉर्निंग एवरीवन. हम ये कॉल को एक बार हिंदी में कर लेते हैं. कल बहुत सारे कंपनीज के नंबर्स आए थे. सो जीएमडीसी के ने नंबर्स रिपोर्ट किए. नेट प्रॉफिट है वो 151 करोड़ रिपोर्ट किया ईयर ऑन ईयर, और रेवेन्यू जो है वो उनका 19.3% से इंक्रीज होकर 539 करोड़ है. इबिटा मार्जिन 31.7% से इंक्रीज हुए ईयर ऑन ईयर. नेक्स्ट अपडेट है पॉलीकैप के भी नंबर्स आए थे. नेट प्रॉफिट है वो 268 करोड़ रिपोर्ट किया है, जो लास्ट ईयर ऑन ईयर में देखे तो 195.2 करोड़ था. रेवेन्यू 10% से इंक्रीज होके 3,332 करोड़ रिपोर्ट किया है. मार्जिन जो है वो 12.8% से इंक्रीज हुआ है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे. टाटा कम्युनिकेशंस के भी नंबर्स आए थे. नेट प्रॉफिट डाउन है 2.1% से 532 करोड़ का रिपोर्ट किया है. रेवेन्यू अप है स्लाइटली 2.8% से 4,413 करोड़ रिपोर्ट किया है. नेक्स्ट अपडेट है प्राज इंडस्ट्री के ऊपर. प्राज इंडस्ट्री के भी नंबर्स आए थे. नेट प्रॉफिट है वो 44.4% ऊपर आके 48.1 करोड़ रिपोर्ट किया है ईयर ऑन ईयर बेसिस. रेवेन्यू भी काफी अच्छा इंप्रूव हुआ है 64.6% से 876 करोड़ रिपोर्ट किया है. मार्जिन 7.7 है. कंपेयर करें ईयर ऑन ईयर पे तो लास्ट टाइम 8.7% था, तो इधर स्लाइटली डिक्लाइन देखा गया है मार्जिन फ्रंट पे. देन सोनाटा सॉफ्टवेयर के भी नंबर्स आए थे. नंबर्स में जो इबिटा था उनका वो अप है 10% से 140 करोड़ रिपोर्ट किया है, और जो उनका नेट प्रॉफिट है वो 6% से इंक्रीज होके 112 करोड़ रिपोर्ट किया है कंपनी ने इंटरिम डिविडेंड 7 रुपीज का डिक्लेयर किया है. देन आईसीआईसीआई जीआई के भी नंबर्स आए थे. रेवेन्यू है वो 18% से इंक्रीज होके 4,419 करोड़ रिपोर्ट किया है कंपनी ने, और जो उनका नेट प्रॉफिट है वो 32% से इंक्रीज होके 591 करोड़ रिपोर्ट किया है, जो लास्ट टाइम हम लोग कंपेयर करें तो 447 करोड़ था.
देन L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज, दैट LTTS के भी नंबर्स आए थे। रेवेन्यू है वो 6% से इंक्रीज हुआ है, 1995 करोड़ कंपनी ने रिपोर्ट किया है। उनका EBITDA मार्जिन फ्लैट आया है 21% से, और उनका जो नेट प्रॉफिट है वो भी ऑलमोस्ट 3% ही है, स्लाइटली फ्लैट है, मतलब पॉजिटिव है। 282 करोड़ रिपोर्ट किया है कंपनी ने। देन उसके अलावा अपडेट्स है कि हर्षा इंजीनियर इंटरनेशनल कंपनी ने एक लेटर ऑफ इंटेंट टू क्लीन मैक्स इन्व्रो एनर्जी को सोल्यूशन को दिया है, जो सेटअप करेगी हाइब्रिड पावर प्लांट प्रोजेक्ट इन पिपराला गुजरात में। नेक्स्ट अपडेट है प्रेस्टीज स्टेट्स के कंपनी के क्वार्टरली सेल्स जो है वो उन्होंने रिपोर्ट किया है 3511 करोड़, जो 66% से इंक्रीज होके उनका जो कलेक्शन है वो 2603 करोड़ है Q2 फाइनेंशियल ईयर 23 में। देन सुवेन लाइफ साइंस कंपनी के जो बोर्ड है उन्होंने राइट इशू के लिए अप्रूवल दे दिया है। उनकी जो ओपनिंग डेट है वो मंडे 31 अक्टूबर को है, एंड क्लोजिंग डेट है वो 10 नवंबर थर्सडे को है। आईटीसी अभी कंपनी जो है वो एंटर करने वाली है अग्रीमेंट, जो अक्वायर करेगी और एडिशनल 1000 कंपलसरी कन्वर्टेबल प्रेफरेंशियल शेयर मदर स्पर्श में। ये कंपनी ने बोला है कि ये एक्वायर हो जाने के बाद कंपनी के पास शेयर होल्डिंग मदर स्पर्श के 22% हो जाएंगे। द नेक्स्ट अपडेट है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर। कंपनी ने MOU साइन किया है डिफेंस PSU मुनीटोन्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो एड्रेस करती है जो रिक्वायरमेंट्स रहता है डिफेंस एंड एक्सपोर्ट मार्केट्स के लिए। जो एरिया है वो एमिनेशन, एक्सप्लोजिव एंड रिलेटेड सिस्टम के लिए उनके साथ MOU साइन किया है BL ने। नेक्स्ट अपडेट है पिरामल फार्मा के ऊपर। कंपनी ने रिसेंटली डीमर्जर किया है पिरामल एंटरप्राइज लिमिटेड के साथ, और अभी और इनका जो शेयर्स है वो फुल्ली पेड, उसकी जो फेस वैल्यू है 10 रुपीज है। अंबुजा सीमेंट ने ट्यूसडे के बोला गया है कि वो इशू एक वारंट्स अदानी फैमिली फॉर्म हारमोनिया ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट उनको इशू करेंगे, और तो वो उसकी जो वैल्यू है वो वारंट की वो 477.4 मिलियन वारंट्स है, और वो इन्वेस्टमेंट रेज करेंगे 5000 करोड़। नेक्स्ट अपडेट है टेक महिंद्रा के ऊपर। टेक महिंद्रा ने अनाउंस किया है कि वो MOU साइन कर रहे हैं गुजरात गवर्नमेंट के साथ, जो एक्सपांड करेगी उनका जो ऑपरेशंस है हायरिंग करने में 3000 एम्प्लॉयज स्टेट में ओवरऑल, और ये नेक्स्ट 5 इयर्स में होगा। टेलीकॉम शेयर्स के ऊपर अपडेट था। मुकेश अंबानी के जो रिलायंस जियो है वो अभी लार्जेस्ट लैंडलाइन सर्विस प्रोवाइडर है कंट्री में फर्स्ट टाइम इन अगस्त में, और उनका 7.35 मिलियन लैंडलाइन कनेक्शन है एज ऑन अगस्त 31 तक। और रिलायंस जियो ने बीट किया है स्टेट ओन टेलीकॉम ऑपरेटर एंड हिथेरो तो मार्केट लीडर जो BSNL है उनके 7.13 मिलियन कनेक्शंस थे। ये डेटा जो है वो TRAI के अनुसार है। नेक्स्ट अपडेट है अदानी इंटरप्राइजेस के ऊपर। अदानी ग्रुप जो है वो अदानी इंटरप्राइज अक्वायर करने वाली एयरवर्क्स इंडिया सेकेंड ओल्डेस्ट मेंटेनेंस रिपेयर एंड ओवरहॉल यूनिट जो है, और उसका जो इंटरप्राइज वैल्यूएशन है वो 400 करोड़ है। ये जो ग्रुप है वो कंट्रोल करता है 7 एयरपोर्ट्स एंड लेटेस्ट इनका जो एक्विजिशन है वो उनको मेंटेनेंस कैपेबिलिटीज ऑल 3 एयरक्राफ्ट में देगी, एयरलाइन, बिजनेस जेट्स एंड डिफेंस में। इसके अलावा एलेम्बिक फार्मा को USFDA के इशू मिला है 483 4 ऑब्जर्वेशन के लिए, जो उनका पेनेलाफ इंजेक्टेबल फॉर्मुलेशन फैसिलिटी है उसका। और कंपनी ने बोला है कि ये एक भी ऑब्जर्वेशन जो डेटा इंटीग्रिटी के अनुसार नहीं, मतलब उसके ऊपर नहीं था। तो ये एक अलर्ट है पेनेलाफ फैसिलिटी जो इंस्पेक्ट हुआ था USFDA का 4 अक्टूबर 4 से लेके 14 अक्टूबर, जो USFDA का इंस्पेक्शन हुआ था उसके लिए। नेक्स्ट अपडेट है भारतीय एयरटेल के ऊपर। स्पेसएक्स करके जो कंटिन्यू फंडिंग है स्टारलिंक इंटरनेट जो यूक्रेन में, वहां से विड्रॉज होंगे पेंटागन फंडिंग रिक्वेस्ट, ये एलन मस्क ने बोला गया है। नेक्स्ट अपडेट है
पीएसपी के ऊपर पीएसपी प्रोजेक्ट्स के कल नंबर्स आए थे, उनका जो स्टैंड अलोन पार्ट है वो 42% से इंक्रीज हुआ है, लोअर देन जो हमारे एस्टिमेट्स है उससे। और जो नंबर्स थे वो लोअर आए एक्सपेक्टेशन से। रेवेन्यू डिक्रीज हुआ है 9% से ईयर ऑन ईयर। इबिटा में भी हम लोगों ने डिक्लाइन देखा गया 29% ईयर ऑन ईयर। और उनका जो एग्जीक्यूशन है वो भी इबिटा मार्जिन जो है वो 10.8% है, जो लास्ट ईयर 14% था। पैट अभी स्टूड हो रहा है 229 मिलियन, जो उसमें भी डिक्लाइन देखी गई है 37% की ईयर ऑन ईयर पे। और ऑर्डर इनफ्लो है वो पॉजिटिव है कंपनी के लिए। नेक्स्ट अपडेट है विप्रो के ऊपर। कंपनी को 5 ईयर का डील मिला है O2 कोम्पो के साथ। जो साइज है वो अभी भी डिस्क्लोज नहीं किए है, और इसके कारण यूरोप में उनका जो रेवेन्यू है वो अच्छा ऊपर जा सकता है। नेक्स्ट अपडेट है एलटीआई के ऊपर। एनसीएलटी ने उनका जो मर्जर है माइंड्री के साथ उसके लिए सैंक्शन दे दिया है, तो ये पॉजिटिव रहेगा एलटीआई के लिए। आज जो रिजल्ट्स आने वाले हैं उसमें आइनॉक्स, अल्ट्राटेक सीमेंट, नेस्ले, इंडसइंड बैंक, एचडीएफसी एसेट मैनेजमेंट, हैवल्स, हैटसन एग्रो, नवीन फ्लोरो, निपॉन इंडिया, निपॉन लाइफ एसेट मैनेजमेंट, मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज, रैलीज इंडिया, परसिस्टेंट सिस्टम एंड ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज। तो ये स्टॉक के ऊपर आप ट्रेड इन और ट्रेड आउट करना थोड़ा अवॉइड ही करना है। So that's it from our end. Thank you everyone for joining the con call. Have a nice day.